Everyone, welcome to Pratham Test Prep YouTube channel. I'm Ashish Bhargav. So, welcome to another episode of Deep Dive, and today topic is Emission Gap Report 2020 and COP27, which is Conference of Parties. So, we will discuss about initially first emission gap report, what should be the way forward, and what is the ranking for India, and what is the concern for the government of India, and taking this scenario. And one more thing that we will got to know that what is conference of parties and how that India is taking this a step to for the emissions. So now further moving, you got to know that this important session is very important. If you are new in this channel, please subscribe and share to your friends and family group. So about current affairs, the best way to know about current affairs, study newspaper and magazines. So that is important topics is we discuss about the news is emission gap report, and here's the quote of the day. And as you know, failure is only the opportunity to begin again the time more intelligently. That is Henry Ford. And here we can see the article that is directly taken from the Indian Express. Why the emission gap report 2020 has raised alarm on climate action. And the next news we can also see, according to the report, as we know, the national pledge taken by countries since last year only make a negligible difference predicted to 2030 emissions. And another thing that emission in India is 6 other nation top pre-COVID levels. So that we will discuss about what is the top, like we can say, emitters of the emissions. UNEP submit the report of emission gap report. UNEP, which means United Nations Environmental Program. So the closing window climate crisis falls on rapid transformation of society has found that in India and 6 other top emitters, which we will discuss in the news. And ahead of COP27 that we will discuss after this emission gap report that we will discuss about COP27, Conference of Parties 27, the United Nations Environmental Program, UNEP released a report titled Emission Gap Report. They will directly ask you in your questions, who published emission gap report? Who published emissions gap report? So who published emission gap report 2022 is, answer will be UNEP, which is United Nations Environmental Program. This is 13th edition of UNEP emission gap report. So edition need to be remembered, 13th edition of UNEP emission gap report. It assesses the gap between anticipated emission to 2030 and level consistent with 1.5 degrees centigrade and 2 degrees centigrade target of the Paris Agreement. And every year the report features way to bridge the gap. What are the findings? The top 7 emitters, the first is China, the EU 27, India, Indonesia, Brazil, the Russian Federation, and United States of America. Plus international transport accounted for 55% of global greenhouse gas emission in 2020. For these countries, greenhouse gas emissions rebounded in 2021, exceeding pre-pandemic 2019 level. So basically, we can say that the emitters initially have to give the subsidy to those nations which we can say that one who is not emitting the greenhouse gas emission. Collectively, G20 members are responsible for 75% of global greenhouse gas emissions. And the global average per capita greenhouse gas emission was 6.3 tons of carbon dioxide. As we know that if the amount of CO2 has to be increases, then we can say that it is the bad consequences for our earth also. And one more thing that we got to know that we can say is the global warming is the alarming condition in the world. So global average per capita greenhouse gas emission was 6.3 tons of CO2. Equivalent in 2020, India remains far below the world average of 2.4 CO2 emissions. World is falling short of goals set forth in the Paris Climate Agreement adopted in 2015. So make sure the Paris Climate Agreement we have adopted in 2015 with no credible pathway to 1.5 degrees centigrade in place. The Paris Agreement defined a global warming limit to 2 degrees centigrade above pre-industrial level, which if exceeded can result in extreme weather events such as extreme heat waves, drought,
water stress, etc. National pledge since to the COP26 Glasgow, UK, that we will discuss in this session, COP27, Conference of Parties 26 and 27. But we will have a light focused on 26 because of the reason because it happened in the last year. COP27 is happened recently in the Egypt. So NASA plays since COP26 Glasgow, UK make a negligible difference to predict to 2030 emissions. So what exactly is emission gap? According to United Nations Environmental Program report, the emission gap is defined as the difference between estimated total global greenhouse gases emission resulting from the full implementation of the nationally determined contribution NDC and the total greenhouse gas emission from least cost pathway consistent with the Paris Agreement long-term goal of limiting global average temperature increase to well below 2 degrees centigrade and pursuing efforts to limit it to 1.5 degrees centigrade relative to pre-industrial levels. So, or in other words, the gap between promised and needed emissions reductions. So in short, we need to keep in mind that emission gap report in shortly that can define the estimated total global greenhouse gas emission resulting from the full implementation of the NDC, which is nationally determined contributions. What are the key findings of emissions gap report 2020? The report shows that the updated national pledge COP26, that is 2021, it happened that we discussed in the today's session, make a negligible difference to predict 2030 emissions. We are far from the Paris Agreement goal that we have achieved, preferably below 2 degrees centigrade and 1.5 degrees centigrade. Policies currently in place joint of 2.8 degree temperatures rises by the end of the century. Implementation of the current pledges will only reduce the 2.4 to 2.6 degree temperatures rise by the end of the century for conditional and unconditional pledges respectively. So basically in short if you can see जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये चीज़ें डिसाइड किए करनी थी कि हमें अपना जो टेम्परेचर है वो प्रेफरेबली 2 डिग्री से नीचे रखनी है विच इज़ आवर गोल. अगर आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हमारी बहुत सारी हैं लाइक पॉवर्टी को हमें वो कम करनी है, ग्लोबल इमिशंस को कम करनी है, अर्बनाइजेशंस को हमें ज़्यादा अच्छी करनी है, बहुत सारी गोल्स हैं उसमें 1 2 3 आप देखें 1 से लेकर 19 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे यूएन के. तो रिपोर्ट ने ये चीज़ें पता लगाने की कोशिश करी कि ओनली एन अर्जेंट सिस्टम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन कैन डिलीवर द इनॉर्मस कट्स नीडेड टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2030. टारगेट है 2030 तक के टारगेट्स को हमें अचीव करना है. 45% compared with the projection based on policies currently in place to get on track of 1.5 degrees centigrade or 30% to for 2 degrees centigrade. तो ग्लोबल इमिशन का ट्रेंड देखें विद द रेट ऑफ ग्रोथ इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन द पास्ट डिकेड हैज स्लोड कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड. एवरेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन द लास्ट डिकेड वर द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड. 2010 से लेकर 2019 तक द एवरेज एनुअल ग्रोथ था हमारा 1.1% पर ईयर था कंपेयर टू 2.6% बिटवीन 2009 से 2009 तक. रीजन क्या था इसका डिकेडल स्लो डाउन होने का? ग्लोबल रिडक्शंस, न्यू कोल कैपेसिटी एडिशन, द स्टडी सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल फॉर द गैस इन पावर सेक्टर ऑफ डेवलप्ड कंट्री एंड द इंक्रीजिंग पेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट. जो टॉप 7 इमिटर्स हैं आपको वो ध्यान रखनी है. चाइना, EU27, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड रशिया फेडरेशन. ये इसको आप अच्छे से याद रखना कि द फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, then India, Indonesia, Brazil and Russia and the United States of America. Plus international transport accounted 55% of global greenhouse gas emission 2020. For these countries, greenhouse gas emission rebounded in 2021, exceeding pre-pandemic 2019 level. Collectively अगर हम देखें तो G20 members are responsible for 75% of global greenhouse gas emissions, which we have already discussed. आपको ये देखनी है कि इंडिया ने क्या इस पे इनिशिएटिव लिया. सो व्हाट आर द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इमिशंस इन इंडिया? भारत स्टेज 4 ये क्या व्हीकल्स हैं? भारत स्टेज 4 एंड भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स. उसमें उजाला स्कीम्स को हमने लॉन्च किया. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑल की एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी सेव्ड एंड द रिलेटेड रिडक्शंस ऑफ CO2 emissions.
बेसिकली उज्ज्वला स्कीम्स आपने देखा होगा, उज्ज्वला स्कीम्स में भी हमने ये कोशिश की थी कि जिसमें आपको गैस सिलेंडर जो थी वो आपको सब्सिडी के तौर पे दी जाती थी, गैस सिलेंडर को छोड़ने के लिए हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था। एंड इसके इमिशंस के लिए भारत स्टेज 4 जो हमारी व्हीकल्स हैं, अभी आपने देखा होगा पॉल्यूशंस की में, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो AQI लेवल हमारा 350 से प्लस चला गया, तो BS 3rd और 4th को व्हीकल को कम्प्लीटली बैन कर दिया, डीजल व्हीकल को बैन कर दिया हमने। सो उजाला स्कीम की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑल की एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी सेव्ड एंड रिलेटेड रिडक्शन CO2 इमिशंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025। इंडिया ने अपडेट किया NDC को, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, seek to enhance India's contribution towards the achievement of strengthening of global response to the threat of climate change as agreed under the Paris Agreement. यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम की अगर बात करें UNEP के बारे में, तो ये लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी थी, स्टैब्लिश की गई थी 5 जून 1972 को। डेट नीड टू बी रिकॉर्ड। कभी आपसे पूछेंगे डायरेक्टली कि व्हेन वाज UNEP वाज एस्टैब्लिश्ड, तो आपको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो था वो एस्टैब्लिश हुआ 5 जून 1972। दैट्स वाई ऐसे आप इसको कनेक्ट द डॉट, 5 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? इज एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे वी सेलिब्रेट ऑन 5 जून 1972। तो आपको डॉट को कनेक्ट करना होगा कि इसमें क्या चीज़ें मेंशन की है। इसीलिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द ओनली रीज़न इज दैट, द रीज़न बिहाइंड, क्या रीज़न है इसके पीछे? द ओनली रीज़न इज 5 जून को UNEP स्टैब्लिश हुई थी। इट सेज द ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सर्व्स एज एन अथॉरिटेटिव एडवोकेट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इसके हेडक्वार्टर्स को याद रखेंगे आप, UNEP के हेडक्वार्टर्स नैरोबी केनिया में है। बहुत सारी अदर रिपोर्ट्स भी सबमिट करती है UNEP, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। और बहुत सारे कैंपेन भी चलाई थी इन्होंने, बीट पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। ये सारी इनिशिएटिव्स किसके हैं? UNEP की हैं। ये आप ऑलवेज याद रखेंगे कि UNEP इनिशिएटिव is major reports of UNEP, United Nations Environmental Program, is emission gap report, adaptation gap report, global environmental outlook, frontiers, invest into a healthy planet, or major campaigns that has to be done by the UNEP is UN 75, World Environment Day and Wild for Life. अगर आप देखें यहाँ पे एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय सेक्टर के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग 15.9%, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल 13%, लैंड यूज बायोमास बर्निंग 12%, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 11.6%, 10.5% फॉसिल्स फ्यूल्स होती हैं, 7.5% रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड अदर सोर्सेज, 3.6% वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट होती है, इलेक्ट्रिक पावर 25.6%। तो मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो सेक्टर वाइज होती है वो होती है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से, राइट। यहाँ से देखिए 72% ऑफ टोटल आपके CO2 रिलीज होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो आपकी CO2 है वो 34.1% है एज पर द डेटा, एंड 40 मैक्सिमम जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, विच इज वेरी डेंजरस। इंडिया ने अपडेट किया NDC को, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। द इमिशन गैप रिपोर्ट ने इलाबोरेट करते ईच कंट्री का NDC, नेशनल डिटरमाइंड कमीशन डिवीजन एज वेल। इन अगस्त 2022 द कैबिनेट अप्रूव्ड एंड अपडेट ऑफ इंडिया NDC. The updated NDC has led to a major policies being pushed forward, including electric vehicle EV5, co-firing of biomass pellets in thermal power plants by 7%, ethanol blending by petrol by 20%, inclusion of
agroforestry and private forestry, solarization of agriculture pumps, clean cooking by shifting to liquefied petroleum gas LPG. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडरिंग किया था कोल गैसिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल प्रोजेक्ट, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड फ्यूचर फ्यूल्स. एंड वी कैन से in recognition of role of lifestyle movement, lifestyle for environment has been proposed for to foster a citizen centric approach to combat climate change. लोकसभा ने पास किया एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 9 अगस्त 2022 को aiming to facilitate the establishment and development of domestic carbon markets. कार्बन मार्केट मतलब कार्बन फुटप्रिंट को हमें कम करनी है, रिड्यूस करनी है. The market's objective is to incentivize actions for emissions reduction expected to result in increased investment in clean energy and energy efficiency areas, especially in the private sector. Now we talk about COP27, जिसके बारे में आप देखेंगे. आप यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मैं आपको दिखा देता हूँ. ये आपकी द हिंदू की आर्टिकल है COP27. अगेन देखें COP27 के बारे में दी हुई है. अगेन स्टेटस चेक बिफोर COP27, ये भी आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है. एंड अगेन COP27 दैट वी हैव डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर बिकॉज द राइटर इज एन इकोनॉमिस्ट विद एन एग्जिम बैंक. एग्जिम में मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के बारे में. व्यूज आर एक्सप्रेस्ड आर वेरी पर्सनल. सो एंड अगेन PIB की न्यूज़ है हमारी, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की. आप देखते हैं 6 नवंबर 2020 को इसने पोस्ट की थी बाय PIB दिल्ली. आपको दिख रही होगी यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है, तो इन शॉर्ट पहले समझते हैं रोड टू नेट जीरो क्या था हमारा. COP26 कंटेक्स्ट में समझते हैं. ये क्या है हमारा COP26? ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCC के बारे में. UNCC मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय UK फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 12 नवंबर. हेड्स ऑफ द स्टेट. अब ये COP26 के बारे में मैं आपको बताता हूँ, COP27 नहीं. सो पहले आप ये समझे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, COP क्या होती है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कम्स अंडर UNFCC, राइट, which was formed in 1994. UNFCC was established to work towards stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere. COP is the apex decision-making authority of UNFCCC. UNFCCC has 198 parties, including India also. India is a party of UNFCCC, China and USA. COP members have been meeting every year since 1995. It laid out a list of responsibility for a member state, which included formulating measures to mitigate climate change, cooperating in preparing for adaptation to the impact of climate change, promoting education, training and public awareness related to climate change. Now देखते हैं कि COP27 से पहले आप जो आर्टिकल्स है उसमें देखते हैं उसमें क्या न्यूज़ है, इसको हम फिर समराइज करेंगे. इसमें है कि डेलीगेट्स जो थे COP27 में क्लाइमेट समिट्स इन इजिप्ट. तो COP27 व्हेन इट वाज हैपन कि ये कहाँ पे हुआ, ये इजिप्ट में हुआ. तो इजिप्ट आपको याद रखनी है. तो डेलीगेट्स एट द COP27 क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट agreed after late night talks to put the delicate issue whether rich nations should compensate poor countries most vulnerable to climate change and the formal agenda for the first time. मतलब जो ज़्यादा इमिट्स करती हैं, अभी आपने देखा हो ग्रीन एमिशन गैप रिपोर्ट में आपने देखी होगी कि इसमें चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2. तो वो एक काइंड ऑफ रिच स्टेट नेशन हो गया. तो रिच नेशन एक पुअर नेशंस को मतलब उसके वाले कंपनसेट करेगा उसे. वो COP26 लास्ट ईयर इन ग्लासगो. COP26 कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में हुई थी. तो COP26 इन ग्लासगो हाई इनकम नेशंस ब्लॉक्ड अ प्रपोजल फॉर अ लॉस and damage financing body instead supporting a 3-year dialogue for funding discussions. तो ये तुम्हारा इन शॉर्ट हो गया COP27 के बारे में क्या एजेंडा था. नेक्स्ट देखिए इस आर्टिकल में क्या है COP27 के बारे में. COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट्स which opens in Egypt from November 6 makes real advances to stave off the worst effect of global warming. Global warming मतलब amount of CO2 जब इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में, amount of CO2 has to be increased in our atmosphere, that is known to be a global warming. This means going beyond COP21 important Paris agreement हमने कब साइन किया था? 2015 में. डेट आप याद रखेंगे. Paris agreement in 2015 on national commitment to cut greenhouse gas emissions, and COP26 is notable Glasgow agreement 2021 to stem deforestation के बारे में.
So just as problematic is the continuous and heavy burning of fossil fuels by the top 5 emitters, China नंबर 1 पे है, सेकेंड पे हमारा कौन सा है, यूएसए, और थर्ड पे is our country India, and then Russia, and then Japan. So China, United States, India, Russia, and Japan, as well as the Southeast Asian country taken together, what is worse, we can say many of their plans are woefully inadequate for reaching carbon neutrality by 2050 to help keep temperature rise below 2 degrees centigrade, as envisaged in the Paris Agreement. COP27 जो है would be a success if progress is made on both these issues, because many of the countries really procrastinate in the issues of climate change, and because they are bound, because वो कहते हैं कि अगर हमने factories, if we close the factory, so that we will lose the economy as well, because फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो लेबर काम नहीं करेंगे, लेबर काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री में जब काम नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. If you are failed to give an export, that will somehow led to the inflation, and we can say that is led to the decline of economic growth as well. So UN goal of at least 100 billion annually in climate finance for developing countries, and COP27 should move to needle on this vital area. So India जो है वो ट्रस्ट करता है फॉसिल फ्यूल्स पे, इज एक्सट्रीमली हाई. High GDP growth, India's biggest goal just cannot be achieved in the face of runaway climate change. The country has set a target due to 2070 by net zero. And if you talk about the neighboring country, India and China, so India and China awkwardly weakened the goal of COP27 from a phase out of coal power to phase down. This, however, is the moment to advance their date for net zero to 2050. और इंडिया का प्लान है डीकार्बोनाइजेशन करने का. सो इंडिया प्लान फॉर डीकार्बोनाइजेशन, इवन इफ वेरी ग्रेजुअल एट प्रेजेंट, विल नेवरथलेस नीड टू सी अ मैसिव स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी. The summits could mark a radical shift in countries adopting carbon pricing, for example, via significant carbon tax on the source of pollutions. Obviously, carbon tax is something like a very good initiative कि अगर आप कार्बन रिलीज करो तो आपको बदले में इतना देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, कार्बन टैक्स ऑन द सोर्स ऑफ पोल्यूशन. It should reiterate the need for all countries to eliminate fossil fuel subsidies. And climate project can be vastly scaled up by multilateral development banks such as the World Bank and Asian Development Bank, all of which have strong climate action mandates. And India जो है वो historically अगर आप देखेंगे तो it has been a hesitant climate actor, not unlike other big emitters. And COP27, which will be held at Sharm el Sheikh, Egypt, 6 to 18th November को है, 6 to 18th November is ongoing, is a chance for the country to strongly back environmentally sustainable development is the national interest as well. इसमें भी देखें तो इसमें भी आर्टिकल में वही सेम चीज़ें डिस्कस की गई है. इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, स्टेटस चेक बिफोर COP27. So annual United Nations Climate Change Conference COP27 beginning on the Sunday is being held in the Egypt. वही सारी चीज़ें सेम चीज़ें उसको भी यहाँ पे बताई गई है कि इसको एटलीस्ट 2.5 डिकेड से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस क्राइसिस को. ओवरऑल क्लाइमेट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंश्योर करना कि राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड 2 डिग्री, दैट इज़ व्हाट वी हैव गोल ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस अग्रीमेंट में जो हमने साइन 2015 में साइन की उसके अकॉर्डिंग. सो कार्बन के बारे में भी दिया हुआ कि कार्बन टैक्स जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए, सो दैट कि अब इसमें देखिए COP27 शुड शन रेडोरेटिक एंड थ्रैश ऑन आउट क्लाइमेट फाइनेंस. तो यही सेम चीज़ें यहाँ भी रिपीट है. तो 4 आर्टिकल्स को अलग अलग से रीड करने का कोई मतलब नहीं है, आपको इन शॉर्ट में मैंने आपको चीज़ें बता दी, एंड दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज COP27 शुड shun rhetoric and thrash out climate finance, and which will be very good for you because you have to make a short points on that, because that was very essential, because now you got to know the nitty-gritty of the subject. So if you have keep an eye on that, the topic, that would be very essential for you. And that will be the news taken from the PIB, which is Press Information Bureau. And as we know that Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, and the person name is Shri Bhupender Yadav, inaugurated India Pavilion 27th session of Conference of Parties of the UNFCCC, Sharm el Sheikh, Egypt today. The Conference of Parties should schedule from 6 to 18th November 2022.
Welcoming the delegates from all the countries of India, Pavilion Shri Yadav said the Prime Minister of Shri Narendra Modi has provided a simple solution of complex climate change problem. Now, the net zero emission that we have already discussed. Now, moving forward, that we have discussed, head of the state is 120 countries are expected to convene in Glasgow, the 26th. And the year 2020 was to have been an important year in the COP calendar, as most of the major economies were expected to review the action undertaken so far. So, COP27 and Conference of Party we have already discussed. 27 Conference of Party UNFCCC COP27 builds on the outcome of COP26 to deliver action on an array of issues critical to tackling of climate emergency. COP27 summits wine news. Recently, UN climate talks up in Egypt. COP27 summits climate compensation on agenda for the first time. India's delegation will be led by Union Environment Minister Bhupender Yadav on 27th session of Conference of Parties UNFCCC from November 6 to 18th. About COP27 summit is 27th Conference of Parties builds on outcome of COP26 and date is November 6 to 18. What is the agenda for India for COP27? India looks forward to substantial progress on the discussions related to the climate finance and clarity of its definition as officials from 200 nations gathered for the COP27 summits. And India will work towards ensuring more clarity on the definition on climate finance for the developing country in order to achieve the climate goal as well. Because this is important to understand, because what is the role of our country as well. Because unless we will not got to know that what is the actual our role, then we will not understand that how the country is achieving the target. India said that absence of definition allows developed countries to greenwash their finance and pass out loans as climate related aid. Developing country, which is including India, will also push rich country to agree to a new global climate finance target. So, United Nations Framework Convention on Climate Change, if you go to the depth, we got to know that what exactly UNFCCC. So, UNFCCC is United Nations Framework Convention on Climate Change was signed in 1992 as a result of United Nations Conference on Environment and Development. If you talk about United Nations Conference on Environment and Development, is also known by other names like Earth Summit. To make sure, sometimes they can frame you the MCQ. The Earth Summit is also known as. So United Nations Conference on Environment and Development, also known by other names, that Earth Summit or Rio Summits. Rio de Janeiro or Rio Conference. Two other outcomes of the Rio Conference were Convention on Biological Diversity and Land United Nations Convention on Combat Desertification, which is UNCCD. About UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, is a multilateral treaty governing action to combat climate change through adaptation and mitigation efforts directed at control of emissions of greenhouse gases that causes global warming. It is considered that parent treaty of both Kyoto Protocol, which is signed in 1997, is a place in Kyoto, and the Paris Agreement in 2015, and UNFCCC entered into force on 21st March 1994. The date need to be recalled because this is directly, they can ask you in your exam that when UNFCCC is entered into force. Okay, so UNFCCC entered into force on 21st March 1984 and has been ratified by 197 countries. India ratified the UNFCCC in 1993. Now we can see, so guys, we have gathered all the information about COP27 Conference of Parties. In short, that we can recall that what is the importance of global emission gap report, that we
released by UNEP, United Nations Environmental Program. And one more thing that we need to keep in mind, that what is the importance of COP26 and COP27. The COP26 is held in Glasgow, and COP27, Conference of Parties, held in is November 6 to 18, is in Egypt. So now, as we know that this session, I hope you enjoyed the session a lot. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well. And one more thing you need to keep in mind, that if you have any questions regarding this, please let us know in the comment section, so that our entire team is always here to help you out, right? Now, if you have any questions, please let me know in the comment section as well. Thank you so much for joining with us, and bye bye, and take care. And the tomorrow session of daily news analysis that will be taken by Hema ma'am. Please stay tuned at 11:30 a.m. Thank you so much. Bye bye, and take care. We'll meet you tomorrow. Thank you. Bye bye, and take care.